Hey everyone, if my voice is audible, एक बार thumbs up डाल दो. So आज का question paper was kind of good. I hope आपका exam अच्छा गया होगा. So the level of difficulty, according to me, it was moderate to easy. It wasn't too easy. थोड़े questions थे जो इधर उधर से आए थे. But let's analyze कि कौन कौन से questions आपको पूछे गए थे. Generally, one main issue was कि आपका जो open office राइटर है क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से आए थे whereas CBSE had mentioned कि आपका अगर MS ऑफिस है तो that would also be okay. So there is one issue there. However, ये आप बाईपास कर सकते हो अगर आपने क्वेश्चंस ऐसे चूज किए हैं जो आप ओपन ऑफिस राइटर के क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट किए हैं. दैट वुड बी गुड. However, the difficulty was moderate to easy. प्लीज लेट मी नो इन द चैट इफ माई वॉइस इज ऑडिबल. एक बार थम्स अप डाल दो. वी विल क्विकली डिस्कस द आंसर की. तो आईटी का जो पेपर है इसमें बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सेट्स आते हैं, 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट. बट द ओनली थिंग इज पूरे कंट्री में सिर्फ एक ही सेट चलता है एंड सबके क्वेश्चंस जो है हमेशा सेम होते हैं. प्लीज लेट मी नो इन द चैट आपको कितने मार्क्स एक्सपेक्टेड हैं आज के एग्जाम से, बिकॉज इट वॉज काइंड ऑफ ईजी, इट वॉजंट टू डिफिकल्ट. सो फाइल नेम एंड फाइल नेम एक्सटेंशन आर सेपरेटेड बाय फाइल नेम डॉट exe. सो बीच में डॉट आता है. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर पार्ट ए. आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन ऑल्सो केम. यस, सम ऑफ द क्वेश्चंस, 1 or 2 क्वेश्चंस आर आउट ऑफ सिलेबस. हम लोग वो भी देखेंगे कौन से क्वेश्चंस थे. सो आई थिंक CBSE डिड नॉट पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू चेक द सिलेबस और probably the notes were not updated which were provided by them. However, आपको अच्छे मार्क्स आने चाहिए. Anyways, let's look at the next question. Which of the following type of communication involves interchanging messages only through images or pictures? So visual communication होता है वो. Dash is the ability to identify and manage one's own emotions. Just a moment, guys. Let me just switch off the notifications for Telegram. Okay, that is done. So please answer this question. Identify and manage one's own emotions as well as the emotions of others. Emotions इतनी बार यूज हो रहा है तो क्या होना चाहिए? Emotional intelligence. Dash is the driving force that pushes us to achieve our goals, feel happy and improve the quality of life. So सेल्फ मोटिवेशन बोलते हैं उसको. Which of the following is not an essential quality to become a successful entrepreneur? कौन सी एक essential quality नहीं है? तो basically जो नेगेटिव चीज होगी जो फिट नहीं हो रही है, that is D part, which is wealthy. In total, how many SDGs were adopted by United Nations? हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था ये. स्पेसिफिकली मैंने बोला था कि 17 SDGs होते हैं. Which of the following features allows one to apply a group of formats at the same time? A group of formats at the same time is called styles. In Writer, styles and formatting option is available under dash menu. It is available in the format menu. कितने लोगों ने ये करेक्टली मेंशन किया था? Gaurav is creating a report in Writer. This image gets embedded. Now, this wasn't directly mentioned in the notes. Directly mention नहीं किया गया था ये question. Some might even say this was out of syllabus. But the correct answer is D. Hold down the control and shift key while dragging and dropping the image. अगर आपको प्रैक्टिकल्स में ये सब सिखाया गया था देन डी ऑप्शन इज राइट. रीसाइजिंग अ डैश में बैडली अफेक्ट द रेजोल्यूशन ऑफ एन इमेज. अगेन ये क्वेश्चन आपके नोट्स में नहीं था बट आप एक वे में इसको सॉल्व कर सकते थे क्योंकि वेक्टर इमेज, कैड इमेज एंड कलर्ड इमेज की क्वालिटी या रेजोल्यूशन अफेक्ट नहीं होती है, रास्टर इमेज की हो जाती है. तो बी ऑप्शन वुड बी राइट. बट आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव स्किप्ड दिस क्वेश्चन, तो इट इज ओके.
इन राइटर यू कैन क्रिएट योर ओन टेम्पलेट इन हाउ मेनी वेज? 2 वेज में आप क्रिएट कर सकते हो, आइदर फ्रॉम डॉक्यूमेंट और फ्रॉम विजर्ड. In writer, dash function key is used to see the databases while implementing mail merge. So I do not know why CBSE asked this question. It is an advanced level question which is not generally used. Even the options are not updated. Correct answer is shift control and F4, but इनमें से एक भी ऑप्शन नहीं है. तो most appropriate जो हो सकता है that could have been F4. However, please let me know कि आपने कौन सा क्वेश्चन मार्क किया. Will we get marks for out of syllabus? आमिर, अगर आपने अटेम्प्ट किया है then we can look at the answer key. आंसर की जब CBSE रिलीज करेगी तब हम लोगों को चेक करना पड़ेगा, बट फॉर नाउ दिस इज द अपडेट. While consolidating data, a cell range can be named using dash option. Define range करके एक ऑप्शन आता है. ये था आपके नोट्स में. दिस इज नॉट आउट ऑफ सिलेबस. प्लीज लेट मी नो व्हाट डिड यू राइट. Mannat is saying, sir, it is in CBSE study material. Which question are you referring to, Mannat? Okay. Kaval and his friends are working on a spreadsheet for entering data and updating records. उनको डेटा का जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको ट्रैक करना है. Which options will help in knowing who made the changes and what changes were done in the spreadsheet? So track changes is the correct option. रिकॉर्ड चेंजेस नहीं है. रिकॉर्ड चेंजेस से आप वो सेटिंग एनेबल कर सकते हो, बट ट्रैक चेंजेस के थ्रू आप वो ट्रैक कर सकते हो किसने कितने चेंजेस किए. डैश इज अ मोर एलैबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक. आंख बंद करके सॉल्वर आपको मार्क करना चाहिए था. आई थिंक 100% ऑफ यू मार्क द करेक्ट आंसर फॉर दैट. मैक्रो क्वेश्चंस कैन बी रिटन टू बिहेव एज रेगुलर फंक्शंस बाय राइटिंग अ और एन. So we are not sure what can be the correct answer. अगर आपने कोई आंसर मार्क किया या फिर स्किप किया है, प्लीज लेट मी नो इन द चैट. We have to wait for the CBSE answer key for this. But from my side, I think void could have been the right answer. Dash option of calc helps in viewing the changes made to a worksheet using the original and edited worksheet. Compare the document. In calc, share workbooks allow merging cells, conditional formatting, inserting pictures and graph, adding text. So this question is a bit unclear. What I think थोड़ा unclear है, क्योंकि जब हम लोग shared workbooks allow करते हैं तो you can do a multiple of things, but the most appropriate one कैन बी एडिंग ऑफ टेक्स्ट. ऐसा नहीं है कि आप ये 3 चीजें नहीं कर सकते हो. आप इसका राइट्स प्रोवाइड कर सकते हो यूजर्स को, बट एडिंग टेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन थिंग. इन ओपन ऑफिस बेस द रिलेशनशिप अप्लाइड ऑन टेबल्स कैन बी रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ डैश ऑप्शन. अगेन, अगर आप ओपन ऑफिस बेस देखोगे उसकी वेबसाइट पे डिलीट कैस्केड दिया है, बट अगेन व्हाट आई थिंक इज दिस वाज काइंड ऑफ आउट ऑफ syllabus in accordance for the theory exams. Practical में अगर पूछते that would have been good, but D option seems to be the most appropriate. But अगर आपने ये option में रखा है, आपने attempt नहीं किया, then it is very good. In SQL, the keyword to display records in ascending order is ASC. Dash is a numeric data type which can store yes no type of values in the form of 0 or 1. So इसको हम लोग boolean data type बोलते हैं. Boolean is correct, A option. Which of the following statement retrieves 0 or more rows from one or more updated database tables, database views? Retrieves मतलब select statement use हो रही है, आप display कर रहे हो एक या एक से ज़्यादा रो. Roshni has created a table customer in SQL and wants to store photograph image of every customer under customer photo field. इमेज नहीं है, पिक्चर नहीं है, ग्राफिक नहीं है, लॉन्ग वेरिएबल बाइनरी डेटा टाइप यूज होता है टू स्टोर इमेजेस, वीडियोस और साउंड्स. बाय डिफॉल्ट ऑल द फील्ड्स इन ओपन ऑफिस बेस विल हैव डैश डेटा टाइप. टेक्स्ट वेरिएबल कैरेक्टर इज द डिफॉल्ट डेटा टाइप.
A dash is a discussion style website similar to an online personal diary. ब्लॉग कहा जाता है उसको, जो एक डायरी के अकॉर्डिंग एक्ट करता है. Natasha works as a floor manager. She has been assigned a task for conducting regular dash to ensure the safety of life in case of any disaster or emergency by evacuating the place of danger. Evacuation drill कहा जाता है. आपने क्या लिखा है, please mark in the chat. Dash is an accessibility feature that assists people who have difficulty in using a keyboard or a mouse. So इसको कहते हैं स्टिकी कीज, हम लोग यूज कर सकते हैं. Network in which all computers have equal status are called peer-to-peer architectures कहा जाता है उसको, जहां पर सारे कंप्यूटर्स का सेम स्टेटस होता है. Dash are text files with small pieces of data like username and password. Cookies would be the correct answer to this. C option is right. DSL stands for Digital Subscriber Line. How can cultural differences be a barrier to effective communication? Now again ये सारे subjective type questions है. आपने जो जो mark किया है आप answer कर सकते हो in the chat. Okay, so let me just go back. Dash is an accessibility feature that assists people who have difficulty in using a keyboard or a mouse or both. So sticky keys नहीं, इसका serial keys होगा. How can cultural differences be a barrier to effective communication? आप own words में अगर लिखोगे it would be the right answer. इसमें कुछ specific answer आप नहीं लिख सकते हो सकता है there can be a difference in how the people understand. आप अपने words में लिखो उन सब चीज़ों को. There are multiple questions जो out of syllabus हो सकते थे, जो expected नहीं थे, and जिनके multiple options भी right हो सकते हैं. So we have to wait and watch what the CBSE announces. Explain 2 misconceptions about entrepreneurship. You have to be born an entrepreneur. कि आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता है entrepreneurship स्टार्ट करने के लिए. Your idea needs to be unique. All these are misconceptions. Briefly discuss the significance of time management skills in order to succeed in life. Time management skills help you schedule your time better. आप अपना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हो, अपना स्ट्रेस रिड्यूस कर सकते हो. ऑल दीज थिंग्स कैन बी मेंशन्ड इन मैनेजिंग ऑफ टाइम मैनेजमेंट स्किल्स. वेरी ऑफन वी हियर अबाउट स्पैम मेल्स. व्हाट आर स्पैम मेल्स एंड व्हाट शुड बी डन विद सच ईमेल्स? यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स. क्योंकि ये पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, इसमें एक पर्टिकुलर राइट आंसर नहीं होता है. देयर कैन बी मल्टीपल राइट आंसर्स. तो अगर आपने अपने वर्ड्स में करेक्ट पॉइंट्स लिखे आपको मार्क्स मिल जाएंगे. What are spam mails? Spam mails are unsolicited mails जिसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको ज़बरदस्ती वो मेल्स आ रहे हैं. These mails should be marked as spam and sent to the spam bin. Mention 2 ways to get clean and affordable energy. Use renewable sources of energy. And आप एक और आंसर लिख सकते हो कोई भी. Write the main steps to group drawing objects in Writer. There can be multiple steps. क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? आपके पास एक डिजिटल डॉक्यूमेंट है, आपके पास एक इमेज है, दूसरी इमेज है, तीसरी इमेज है. हाउ कैन यू ग्रुप देम टुगेदर? सो वन ऑफ द वेज इज आपने सबको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट ऑल, देन यू राइट क्लिक, देन यू क्लिक ऑन ग्रुप. दिस इज वन वे. द अदर वे इज आप फॉर्मेट मेन्यू में जाओ एंड ग्रुप में जाके आप ग्रुप सेलेक्ट करो. What is the purpose of consolidating data in spreadsheet? जब भी आपको अपना डेटा समराइज करना है फ्रॉम मल्टीपल शीट्स, तब हम लोग कंसोलिडेशन करते हैं. अपने वर्ड्स में लिख सकते हो. डिफरेंशिएट बिटवीन LAN एंड WAN. दिस इज local area network, this is wide area network, this is in small areas or buildings, very high speed, whereas this covers a larger area, approximately 2000 से 3000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया होता है, एंड थोड़ी स्पीड स्लोअर होती है, ऑन द स्लोअर एंड.
स्टेप्स भी आए थे. यस, वन क्वेश्चन वाज आस्क्ड. फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ आईटी एक स्टेप बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, बट वी हैड डिस्कस दैट इन द वीडियोस. What are the two parts of cell reference while referencing data on other sheets? तो जब हम लोग सेल रेफरेंस कर रहे हैं किसी और शीट से, दो चीज़ें मेंशन करनी है. फर्स्ट इज द शीट नेम, एंड जिसके आगे एक एक्सक्लेमेशन साइन लगता है, एंड द सेकेंड पार्ट इज सेल एड्रेस और सेल रेफरेंस. एंड एग्जाम्पल कुड बी sheet 1 E1 to D2. This can be one of the examples. अगर आपने कुछ similar लिखा है वो भी आंसर हो सकता है. Give any two benefits of creating relationships between tables in a database. It eliminates the data redundancy. Data redundancy mention कर सकते हो, and improves data integrity. अगर आपने कुछ और mention किया है, you can share the data and all these things. That is also right. Mention two basic fire safety rules to be followed in any organization. आपके पास एक fire safety exit होना चाहिए. Exit should be clear at all times. There should be drills. You can write it in your own words. What is the concept of mail merge in word processing software? Discuss in detail. आपको ये चीज अपने वर्ड्स में मेंशन करनी है कि आपके पास दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं. दिस इज मेन डॉक्यूमेंट एंड दिस इज डेटा सोर्स. आपको ये दो चीजें मेंशन करनी है, एंड यू कैन मर्ज देम टू क्रिएट invites or labels. It reduces manual work and effort and also saves time. अपने words में आप लिखो, you will get the marks. 4 types of hyperlinks. Now again, this question is not framed correctly. There are only 2 types of hyperlinks, but hyperlinks can point to 4 types of files. So this question is not correctly written. Let's see what CBSE does about it. But 4 type of files होती हैं. First is your local file. Second can be a news or blog. Third can be a website. Fourth can be another worksheet. आप कुछ भी लिख सकते थे इनमें से. Internet security is of prime concern nowadays. Using strong passwords. Okay. 4 general guidelines for managing strong passwords. It should be long. It should be complicated by using special characters. Special characters use करोगे. अपने date of birth, अपना नाम और common passwords नहीं रखोगे. All these things can be mentioned. In OpenOffice base, explain the concept and significance of forms. Forms की use होता है to input the data, and reports is used to summarize the data. You can elaborate over these 2 things, but this would be the right way to answer them. Display the names of all products whose category is domestic. तो देखते हैं. Names of all products. So basically select P name from product. So ये first का है. Display product name and price whose quantity is less than 50. P name comma price from product. Where quantity is less than 50. Okay, so this is the second one. Display the price and quantity of laptop. So again आप क्या लिख सकते हो? Select
So this is the third one, and the fourth one is display name and quantity of those products whose price is above 5,000. So name and quantity आपको लिखना है, and end में लिखना है where price is greater than 5,000. So this is how you can answer it. Steve Tom. Okay. Do we have to add double inserted comma for writing P name and price? P name and price के लिए आपको नहीं लिखना है. अगर आप डोमेस्टिक लिख रहे हो तो इन्वर्टेड कॉमास लिखना है, लैपटॉप लिख रहे हो तो इन्वर्टेड कॉमास यूज करना है. So I hope all of your exams went really well. ये था आंसर की फॉर 2024 IT एग्जाम्स. नाउ इन क्लास 11th अगर आप IP चूज कर रहे हो, CS चूज कर रहे हो या फिर AI चूज कर रहे हो, I'll be seeing you in the next video, and all the best for your upcoming standards, which is class 11th. Can't we write primary and foreign key as cell reference? No, you cannot, because वो cell reference is the topic of electronic spreadsheet and not DBMS. Serial key not sticky. Yes, Ishant, I corrected myself there. Went okay. Yes, the question paper was a bit moderate to easy difficulty, but अगर आपने कल का सेशन अटेंड किया था एंड आपने करेक्टली क्वेश्चंस चूज किए थे आंसर करने के लिए, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड बी गेटिंग 45 प्लस. सो थैंक यू एवरीवन. एआई का आंसर्स टीम ऑलरेडी डिस्कस हो गया है मौर्य. यू कैन गो देयर ऑन द चैनल. लाइव सेशन हुआ था इसके जस्ट पहले. Okay guys, see you in the next one. Till then, stay awesome. Bye bye.